ये हम अमेरिका के एक छोटे से कर्व्स पे बिशप टाउन में हैं। ये हम लॉस वेगस से सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। रास्ते में हमारे यहाँ स्टे है। ये चारों तरफ से पहाड़, बर्फपोश पहाड़ियों में घिरी हुई वादी है और आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा टाउन है। खुली खुली सड़कें हैं और बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है जिस तरह मेन शहर होते हैं। No covered top mountains and big roads, wide roads, and the atmosphere is very nice. People from San Francisco and Los Angeles come here for skiing, and you can see that. That's the reason, because the skiing resort is near here. The cars are big, like Tundra. In America, you see all the big cars. If you look around, they call it trucks. Hello! See, they're all big trucks. Hello! Everyone is waving. We're looking different, probably that's why everyone is waving and welcoming us. They are very welcoming people. Now we are driving towards these snow-covered mountains. This is Yosemite National Park area. The road are probably a bit close, so we have to go a long way to reach there. This mountain range separates the Death Valley, which is the driest place on the US and the hottest place in the US, from the green area of the California. And you can see on the back snow-covered mountains, and on the front where we're driving, snow-covered mountains. Wow, wow, this place is amazing. Wonderful natural beauty. You look around, this whole valley is covered in thick snow. It's an amazing place. This is the Crowley Lake in California, at the height of 6,000 feet above the sea level. And this whole lake is frozen. You can see the whole lake is frozen. And wow. Damanga Yosemite National Park Tarawanyo. Zabardast. Look at the scenery. Look at the snow. The forest, the thick forest. Amazing. Wow. The amount of snow is unbelievable. التصوير زي خلق بالميسين Amazing natural beauty. Kafa kem suwa ma sikasip se bo so commentary ho gaya ra snow da dera mazedar ha bas da shakhsoman ma sezu ya uchatka uchatka di wauri le rao bogo फिर से राजा rakusha साथ फिर से मुकाबला राकुशा जिसको और के करती na barabadi unisa de to kapde mein ऊपर ना चले ऊपर अबे कदा खरे लगते ना गुजारा को शख्सों में ना गुजारा को अले कड़े खुले सीट जोड़ा वाला गोला सांचा जोड़ागी जोड़ा वाला गोला बस काम उस बाबा रशी गाड़ो बदोख करी
That's the Lombard Street. The streets are very steep, so they have made this curve. Somebody designed it, and then they put these greeneries, like green mat inside, to reduce the steepness. And suddenly it becomes a tourist sensation. Everybody from around the world is coming and visiting this Lombard Street. It was famous, but you can see they're here, and the number of tourists here is phenomenal. It's a must-see place. Anyone comes to San Francisco, you can see people are making live videos. Hi guys, we're in San Francisco main city center. There's the Powell Street, and these are the famous trams running around. The streets are so steep in some places. It's very hard. It is very hard to climb. It's like climbing a hill. Today is Saturday. The streets are buzzing with tourists. You can see all these people are in queue to get to the tram. It's the Powell Street. These are the signboard telling you how far are different cities. Zurich is 5,829 miles. Haifa, Amman, Barcelona, Paris, Kiev, Sydney. It tells you how far they are. दोस्तों ये हम सैन फ्रांसिस्को में मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज, जो एक आइकॉन है, इसकी एक हिस्ट्री है, और इसकी मशहूर और ख़ास बात ये है कि आज से 70-80 साल पहले उन्होंने ये ब्रिज तामीर किया था। तो ये इसके दो जो पिलर हैं, इसके दरमियानी फासला 1 मील है। That was the longest. ये बहुत बड़ा स्पैन था। हम इस पर भी थोड़ी देर में वॉक करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आइकॉनिक ब्रिज है। सारी दुनिया से टूरिस्ट आए हुए हैं, और ये हमारे एक टूरिस्ट दोस्त भी आए हुए हैं। जी जनाब, कहाँ से आए आप? जनाब अली मर्दान से। मर्दान? अच्छा, मर्द आन। तो मर्द उर्दू का लफ्ज़ है और आन इंग्लिश का। ठीक है, आप यहाँ सैर करने आए? नहीं। अच्छा, सस्ता ने आए। इसको भूख लगी है या कुछ खाने आया है? कटरास भी दिखाओ, रॉक फिल्म भी दिखाओ। हाँ, अल्कट्रास, ये वो मशहूर रॉक फिल्म है जो जेल खाना था अल्कट्रास। ये वो है समंदर के दरमियान में, और अगर आपने रॉक मूवी नहीं देखी हुई तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और इसकी जो आपको ऊपर मेन जाती हुई केबल नज़र आ रही है, ये इतनी बड़ी है कि इस वज़न को सपोर्ट करने के लिए बंदा इसके साथ खड़ा है। आप देख लें कि हाउ बिग इज़ द केबल, और इसमें 27,572 केबल हैं। 2,331 मीटर लंबी ये इसका केबल है, और ये डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को यहाँ से नज़र आ रहा है। बे पे बने गोल्डन गेट ब्रिज के बिल्कुल वस्त में है, हाफ वे दैट वे और हाफ वे दैट वे। और यहाँ से आप सैन फ्रांसिस्को सिटी सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा डायमीटर है तारों का जिसने इस पुल को सपोर्ट किया हुआ है। 1937 22 मई 1937 को इसका इफ्तिताह किया गया, और अब तक ये पुल कायम मुदायम है। इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, और ये दो पिलरों के दरमियान 1 मील का फासला है। 1937 में इतना बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बनाना बज़ात खुद एक शाहकार है। ये एक पिलर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका वज़न 22,000 टन है। तो जस्ट इमेजिन 1937 में इतना पहले ये पुल बनाया गया, और ये इस तरफ खुला समंदर है, और इस साइड पे ये सैन फ्रांसिस्को शहर है।
ये हमारे पायलट के पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त, इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ये एक मस्ट सी जगह है, यू मस्ट सी। ये सैन फ्रांसिस्को सिटी है, ये इसका फाइनेंशियल सेंटर है, और इसके साथ ये अल्काट्राज, एक मशहूर ज़माना जेल, और जो रॉक मूवीज़ पे बनी थी। जगह जगह से लोग इसको सैर करने के लिए आते हैं। ये हम इसके बिल्कुल वस्त में खड़े हैं, और बहुत बड़ा और इंजीनियरिंग का एक शाहकार पुल है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सैन फ्रांसिस्को बे है, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है। और ये इसमें जो कश्तियाँ चल रही हैं, इसकी साइज़ से आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी बे है। सो ये हम गोल्डन गेट ब्रिज पर ड्राइव कर रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को के बाहर जा रहे हैं। Nighttime view of the Golden Gate Bridge. That's San Francisco City, lights of San Francisco City, the traffic on the Golden Gate Bridges.